All right, guys. So in statistics, we'll cover these primary portions, right? So what you have to discuss is variables. What are different types of variables that you will encounter in a machine learning problem, in a data science type of problem? उनके क्या characteristics होते हैं? How do you sort of measure their central tendency, measure dispersion? ठीक है, central tendency dispersion क्या होता है इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करूंगा, but this is overall the objective of statistics. ठीक है, so we'll start with variables. We'll also look at different type of variables, measure central tendency, dispersion, skewness, and kurtosis. Then we'll talk about different distributions, right? So we'll talk about normal distribution, which is most common. We'll talk about Poisson. We'll talk about uniform, and we'll also talk about exponential distribution. Then there's a very important theorem in statistics, which is very much related to normal distribution, और ये sampling में काफी help करती है. So we'll talk about that. I also have to cover in this, or I'll also cover sampling techniques, right? Because जब भी आप कोई machine learning या data science problem solve कर रहे हो, you'll always need some kind of historical data, right? जिसके ऊपर आपको, जिस पे आप analysis करेंगे, जो भी करेंगे, तो जब data बहुत ज़्यादा होता है, right? So let's say you're dealing with 330 million, 400 million, 500 million kind of data. उस टाइम पे सारे डेटा पे एनालिसिस करना might not be something that is possible. So what is recommended at that point is to use a sample. तो उसके लिए हम लोग कुछ sampling techniques भी देखेंगे. I think hypothesis testing आप लोगों ने cover किया है. I remember you said we had covered. Theoretically हमने नहीं cover किया. Okay, so we'll cover then Z test हम cover करेंगे, T test हम cover करेंगे, chi-square test cover करेंगे. And I think आप लोगों ने जो Python implementation है तब I think you guys had that, right? ठीक है, so we'll cover the theory behind all these tests, and then we'll also talk about a very important thing called covariance or correlation. What this means is जब आप variables को study करते हो किसी एक data science problem के लिए, तो वो variables में कुछ relationship होता है. जैसे अभी मैं काफी बारी बोलता हूँ, right? There are some variables that might be related, that might be not related. तो वो relationship आप कैसे establish करोगे? That's what correlation helps you with. Okay. So ये topics note down कर लो, what we'll cover. So this will serve as an index for you. जहाँ पे आप, अगर आपको revise करना है तो you can always look at this index broadly and then choose topic wise. So जो भी slide पे मैंने लिख रखा है वो सब आप note करो, right? So it will add to your referral notes whenever you want to revise. ये है normal distribution, ND. We have Poisson distribution. UD is uniform distribution, and EXP is exponential distribution. This question kurtosis, KURTOSIS.
Okay, so now let's first talk about variables, right? So there are primarily two type of variables that you will encounter in any problem. Qualitative, also sometimes called categorical. These variables are like gender and grade, right? जहाँ पे आपके पास categories होगी, या फिर जैसे अगर temperature है high, medium, low, तो वो भी आपका हो सकता है एक categorical variable. जहाँ पे भी आपका कोई variable which is basically a non-numeric, a category and defined within a range, जिसका एक range define किया हो गया हो in terms of generally जो भी categorical variables आपको मिलेंगे they will all be character or string kind of variables, but sometimes some data vendors also annotate numeric as categorical variables, right? So let's say जैसे अगर आप बात कर रहे हैं एक variable की which tells how many people are living in a house, right? So this could be let's say 0 to 5 for a particular area, क्योंकि वैसे change भी हो सकता है, कुछ 10-12 भी हो सकता है, but for the sake of simplicity let's say 0 to 5. Now when you're talking about 0 to 5 तो ये 0 1 2 3 4 5 है, पांच ही की कैटेगरी है, ज्यादा हो नहीं सकता और 0 से कम हो नहीं सकता, so that again becomes a categorical variable, although it might be looking numeric to you, but it is a categorical variable which is defined within a particular boundary, right? Humidity also categorical. हाँ, humidity, high, low, medium अगर आप measure कर रहे हो, anything which is basically alphabetical या string या इस type का जो भी variable आपको मिलेगा वो हमेशा categorically होगा. What exceptions can be where numeric variables can be categorical. तो वहाँ पे कुछ exceptions आते हैं, like I give an example of. फिर आपके आते हैं quantitative या फिर numeric variables. उसके अंदर आपका आ गया जो भी numbers आप number line पे देखेंगे, जैसे आपका अगर आप age ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं या टेम्परेचर इन इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री, राइट? सो ऑल ऑफ दोज आर न्यूमेरिक वेरिएबल्स. सो सबसे इजी तरीका याद रखने का ये है कि जो भी आपके क्वांटिटेटिव या कैटेगोरिकल क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल वेरिएबल्स रहेंगे दे विल ऑलवेज हैव categories number one, and those categories will mostly be alphabet or word based, right? जैसे gender जो है वो male और female है, grade A, B, C, D, E, F, right? So that kind of a thing. Then you have, okay, qualitative में different types of varieties are there, and quantitative में there are different types of varieties, okay? So qualitative में you will see nominal variable, ordinal variable, binary and ratio variable. अब nominal variable क्या होता है? जो मैंने आपको बताया अभी एक example जो मैंने आपको दिया qualitative में, जिसमें मैंने आपको बोला ओके 0 1 2 3 4 और 5 जो राइट, अगर आपका वेरिएबल इस तरीके से डिनोट किया गया है देन इट बिकम्स अ ऑर्डिनल वेरिएबल,
Why? Because it can be rank ordered, right? You can see that 0 is less and 5 is more. और जैसे अगर हम टेम्परेचर की भी बात करें, हाई, मीडियम, लो, तो ये भी ऑर्डिनल वेरिएबल है, क्योंकि इसमें आप बोल सकते हो जो हाई वाला टेम्परेचर रेंज है, इट विल ऑलवेज बी लेट्स से 40 to 50 डिग्री सेल्सियस. मीडियम विल बी let's say 30 to 40 degrees Celsius. Low will be less than 30 degrees Celsius. Okay, so that this is also an ordinal variable. Gender जेंडर नहीं, ग्रेड ऑर्डिनल होगा या नॉमिनल होगा? ग्रेड अगर मेरे पास ग्रेड्स हैं ए बी सी डी ई, मेरे पास ग्रेड्स हैं, सो विल दिस बी ऑर्डिनल और विल दिस बी नॉमिनल? नॉमिनल क्यों होगा? ये ग्रेड्स में ऑर्डर डिफाइन नहीं होता है. मतलब अगर किसी को ए ग्रेड मिला है तो क्या इसका मतलब वो है कि उसको 60% मार्क्स मिला होगा? तो अगर किसी को ए ग्रेड मिला है तो ऑब्वियसली वो टॉप पे है. दैट मींस इट कुड बी 90 प्लस, 85 प्लस, व्हाटएवर इज द क्राइटेरिया, राइट? बी जो है वो उससे कम होगा, सी उससे कम होगा, डी उससे कम होगा और ई फर्दर सबसे कम होगा. दैट्स व्हाई दिस इज अ ऑर्डिनल वेरिएबल. ओके, अब मुझे बताओ जो जेंडर है, मेल और फीमेल, will that be ordinal or will that be nominal? Exactly, क्योंकि आप इसमें बोल नहीं सकते हो मेल और फीमेल में कोई डिस्टिंक्शन इन टर्म्स ऑफ कौन ज्यादा है कौन कम है. नथिंग लाइक दैट, राइट? मेल एंड फीमेल इज जस्ट अ वे टू डिफाइन the gender of people who we are talking about. Okay, let's take a few more example. Pass और fail जो है, will that be ordinal or will that be nominal? ये नॉमिनल होगा, क्योंकि इधर क्लियरली आप बोल रहे हो ना, या तो कोई पास हो रहा है या तो कोई फेल हो रहा है, बट देयर इज नो ऑर्डर एज सच, राइट? कि मतलब आप ये तो कभी नहीं बोलोगे ऐसे फेल इज ग्रेट, बट आप ये इसको रैंक ऑर्डर नहीं कर सकते. अगर आप मार्क्स ले रहे हो तो मे बी देन यू कैन से यू नो दैट कुड बिकम ऑर्डिनल, बट जनरली पास एंड फेल will be a nominal variable. Okay, let's talk about some other variable. क्या एग्जांपल ले सकते हैं? Let's say we are talking about so we have different buildings और हम उनके floors की बात कर रहे हैं कि कितने floors है हर building में. So will that kind of a variable be nominal or ordinal? It will be ordinal, right? क्योंकि हर बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में 25 हो सकता है, किसी बिल्डिंग में 26 हो सकता है, तो इस तरीके से क्योंकि आप रैंक ऑर्डर कर सकते हो उसको, it will be ordinal variable. ठीक है, सो नॉमिनल और ऑर्डिनल में अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे अगर कार है, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट कार्स, तो कार्स में इफ आई हैव द कैटेगरी ऑफ व्हाट टाइप ऑफ कार इट इज, क्या वो हैचबैक है, क्या वो सेडान है, क्या वो एसयूवी है, तो विल दैट बी अ नॉमिनल और ऑर्डिनल? व्हाई नॉमिनल? मैं बात कर रहा हूँ, लेट्स से मेरे पास कार्स हैं, 3 गाड़ियां हैं मेरे पास. एक हैचबैक है, एक एसयूवी है और एक सेडान है. तो क्या मैं इसे रैंक ऑर्डर नहीं कर सकता? Hatchbacks are generally small in size, right? Sedan is a little bigger than a hatchback, and SUVs are huge, right? तो आप उसको ऑर्डिनल वेरिएबल कह सकते हो, क्योंकि आप उसको रैंक ऑर्डर कर पाओगे. अगर वो कोई भी ये पूछेगा कि इन तीनों में से सबसे बड़ी गाड़ी कौन सी है, तो आप ऑब्वियसली आप मोस्ट ऑफ द टाइम विल से दैट इट इज एन एसयूवी, राइट? ऑल्दो कुछ सेडान्स ऐसी भी होती हैं जो एसयूवी से लंबी होती है, बट द परसेप्शन अराउंड दीज कैटेगरीज इज दैट एसयूवी इज अ बिग कार, sedan is a medium car, and hatchback is a small car, right? So it can be rank ordered. Then we can talk about binary variables. So जैसे अब pass और fail वाला variable है, right? That's a binary variable जहाँ पे आपके पास सिर्फ 2 outcomes आ रहे हैं.
0 एंड 1। तो 1 एक आउटकम है, 0 एक आउटकम है। दूसरा है ट्रू और फॉल्स, अगेन राइट, विच इज ओनली 2 कैटेगरीज आर पॉसिबल, सो दोज आर कॉल्ड बाइनरी वेरिएबल्स। देन देयर इज रेशियो। रेशियो अगर आप किसी एक वेरिएबल को एक प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं, राइट, तो वो रेशियो बन जाता है। सो फॉर एग्जांपल, if you're talking about the probability that is being assigned, right, to an event, जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया, उसके बाद आपका एक इवेंट आया, उसमें आपकी आप हेड्स की प्रोबेबिलिटी मेजर कर रहे हो। तो पहले कॉइन में वो आया तो द प्रोबेबिलिटी इज 0.5, देन आपने दूसरे टाइम किया तो कुछ और प्रोबेबिलिटी हुई, राइट। ऑल दोज प्रोबेबिलिटीज विल चेंज as you toss the coin and again and again and again. Overall, the probability will remain 0.5 for heads, 0.5 for tails. It will sum up to 1. Mother, it can be expressed as a probability and hence it can be expressed as a ratio. So जहाँ पे अगर आप रेशियो का और एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो कि अगर आपको let's say you have to distribute a cake between or a pizza between few people in the class or in a party. तो जब आप उस पिज्जा को डिवाइड करोगे तो यू विल डिवाइड इट इन डिफरेंट पार्ट्स, राइट। इट कैन बी इक्वल, इट कैन बी अनइक्वल, बट दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ रेशियो। ओके, अगर 10 लोगों में है तो एवरीबडी गेट्स 0.1 of that pizza, या 10% of the pizza if it is distributed between 10 people. So वो रेशियो को आप वेरिएबल्स को एज अ रेशियो भी एक्सप्रेस कर सकते हो, बट जनरली एज अ रेशियो आपको वेरिएबल्स नहीं दिखेंगे। आपको सिर्फ जब हम कोई क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे मशीन लर्निंग के अंदर, वहां पे हमारे जो स्कोर्स आते हैं कि क्या कोई पास हो रहा है या फेल हो रहा है, वो एक प्रोबेबिलिटी में एक्सप्रेस किया जाता है, राइट। सो एट दैट टाइम द वेरिएबल माइट लुक लाइक अ रेशियो काइंड ऑफ वेरिएबल। ओके। देन यू हैव क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव में दो टाइप की कैटेगरीज है, एक कॉन्टिन्यूस और एक डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस जो है वो कहीं पे भी नंबर लाइन में एग्जिस्ट कर सकता है, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी के बीच में, and it can be a fractional number as well. So a number like 1.001, number like 2 point something, right, 10 point something. So it does not have to be a whole number. Okay, it can be a fraction. Discrete जो है वो भी number line पे exist करते हैं, but they will always be whole numbers. Okay, so whenever you're talking about discrete, it will be 1, 2, 5, 10, 15, something like that. Continuous can be any number, including fractions. Okay. All right. ठीक है. Quickly write down this.
Okay, आगे बढ़े. Any questions? Okay. Okay, now let's talk about sampling, and then we will talk about central limit theorem. Okay, so some terminologies that we will very frequently use uh, going forward, especially in statistics. और जब भी आप आगे भी statistics journals पढ़ेंगे या कोई research करेंगे, so this terminology is almost universal. So you'll find that everywhere. So let's start with what we mean by population. So population is a collection of observations across a wide spectrum, e.g., let's say total number of cancer patients in India. Okay, so जब भी आप population की बात कर रहे हैं, you're talking about a broader set of observations which can have people from different parts, or when you're doing a study, it can be a bigger number of people than what you want to analyze on. Okay, so population में there are two things. जब भी आप measure करते हैं population के अंदर, how do you understand what the population is all about? That's using mean and standard deviation. ठीक है, so mean जो है is a measure of central tendency.
and standard deviation is a measure of dispersion. Okay, so mu is generally used to denote the population mean, and sigma is used to denote the population standard deviation. ये क्या होती है मीन और स्टैंडर्ड मीन शायद आपको पता हो मीन और एवरेज के बारे में आपको पता होगा बट स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होती है वी विल स्टडी दैट अ लिटिल बिट मोर इन डिटेल बट फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग अभी याद रखो पॉपुलेशन could be let's say जैसे number of patients or for example total number of students who apply for a data science course in Ematicus, right? That could be your population. Total number of people who appear for data science interviews, that is your population. अब population में से generally आपको एक sample निकालना होता है एंड ये सैम्पलिंग क्यों जरूरी है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ केसेस में आपका बहुत ज्यादा डेटा होगा राइट एंड इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू एनालाइज ऑल द डेटा so you'll always need a sample which looks like population. Okay, so sample is basically nothing but a proportion of the population. सारा डेटा हम नहीं लेंगे बट उसमें से कुछ डेटा हम उठा के हम उसके ऊपर स्टडी करेंगे राइट एंड इट इज समटाइम्स आल्सो नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द पॉपुलेशन इनटू कंसीडरेशन. जैसे अब मान लो जब कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स ये लोग कर रहे थे राइट तो उस टाइम पे पूरी दुनिया का डेटा तो वो नहीं ले सकते थे जिन लोगों को कोविड हुआ है ना ही इनके ऊपर टेस्ट कर सकते थे. द आइडिया वाज टू डू टेस्ट ऑन अ स्मॉलर सेट ऑफ पीपल, see how they would react to the medicine, and then on the basis of that further evolve the medicine and make sure that by the time the medicine ke successful trials were done, complete human and animal, it is stable कि इसमें कोई side effect नहीं है and then it can be launched to the broader market, right? अब यही पे प्रॉब्लम देखो ये एक सिंपल सी प्रॉब्लम तो नहीं थी वैसे वैक्सीनेशन इतनी कम टाइम में डेवलप करना बट यू कैन इमेजिन अगर वो यहाँ से स्टार्ट करते कि हमें पूरी पॉपुलेशन या हमें ज्यादा पेशेंट्स चाहिए और हम उसके ऊपर तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता वो करना राइट. सो द आइडिया इज टू टेक अ स्मॉलर set of people, smaller set of observations from your original population, conduct the study on that, and then report how that study will perform. अब जब आप ये कर रहे हो पॉपुलेशन और सैंपल के आपने एक सैंपल लिया उसके ऊपर आप कुछ कोई भी एक मेडिसिन टेस्ट कर रहे हो क्या चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. सो थिंक ऑफ कोविड वैक्सीन्स राइट. सो व्हेन दे वर डेवलपिंग कोविड वैक्सीन्स उस टाइम पे व्हेन दे वर सिलेक्टिंग देयर पॉपुलेशन सिलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम द ओरिजिनल पॉपुलेशन मतलब जो जिन लोगों को कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो उस टाइम पे अगर आप रिसर्चर होते तो आप क्या फैक्टर्स कंसिडर करते व्हेन यू वर सिलेक्टिंग अ पेशेंट. वेरी गुड. नंबर वन सबसे प्राइमरी थिंग है एज ग्रुप. व्हाट एल्स? व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? कोमॉर्बिडिटीज राइट. किसी को डायबिटीज है, किसी को कोई और प्रॉब्लम है, किसी को कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है राइट. वो सब चीजें आप यूज करके सो व्हेन यू आर यूजिंग ऑल दीज क्राइटेरिया टू सिलेक्ट अ सैंपल दैट इज कॉल्ड स्टैगर्ड सैंपल. जहां पे आप एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया यूज कर रहे हो और वो क्राइटेरिया के बेसिस पे आप एक सैंपल बनाते हो दैट्स कॉल्ड स्टैगर्ड सैंपलिंग. जहां पे यू नो ओके ठीक है मेरे को एज ग्रुप इतना लेना है, ये कोमॉर्बिडिटीज लेनी है और जो भी आप क्राइटेरिया डिफाइन करो दैट्स अ स्टैगर्ड सैंपलिंग. रैंडम सैंपलिंग इज कि मैंने रैंडमली कोविड पेशेंट्स उठा लिए without thinking about their age group, without thinking their comorbidities, and I administered the vaccination and tested it out. जब आप कोई क्राइटेरिया नहीं डाल रहे हो सैम्पलिंग करने के लिए दैट्स अ रैंडम सैम्पलिंग. यहाँ पे आप रैंडमली किसी को भी उठा रहे हो राइट. ऑफ ऑल द पेशेंट्स दैट यू हैव इन योर एरिया आप उनको सबको लेकर आके उनके ऊपर टेस्ट कर रहे हो विदाउट डिफाइनिंग अ क्राइटेरिया. Okay, so random sampling or staggered sampling जो है these are two types of techniques to use when you're sampling from the original population. Okay, ठीक है. Write this down.
Prerna? ये लो आया है.
Okay, guys. Now let's talk about measures of central tendency and measures of dispersion. Okay, now when we are talking about measures of central tendency, we are primarily talking about three things: mean, median, and mode. Okay. तो ये जो मैंने इधर फॉर्मूला लिखा है, इट्स यूज्ड टू कैलकुलेट मीन. मीन का मतलब क्या होता है? अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस है, वो ऑब्जर्वेशंस को सम अप करो एंड डिवाइड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? So if I have 1, 2, 3, 4, 5, I'll sum this up. तो मीन होगा 3, राइट? अब देख रहे हो ये वैल्यू सेंटर में लाई कर रही है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि ये आपको आपके डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में बताता है. Then there is median. Median is the central most value in the data. But one criteria is that you need to sort the data first. अगर आपको डेटा इस तरीके से दिया गया है, let's say same observations I take 3, 4, 2, 5 and 1. इसका अगर आप मीन कंप्यूट करोगे 3 आएगा, राइट? बट अगर आपको इसका मीडियन कंप्यूट करना है, maybe you'll think that this is the middle value, but no. The middle value after sorting that data will be the median. So if I sort it in the descending or ascending order, that does not matter. तो जो उसकी central value आएगी 3, 4, 5, that will be the median. Okay. So that's your mean, that's your median. ये formula जो है ये mean का formula है. ये formula को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हो. If I have to, I've written it down actually. So if you have different observations, so example from 1, 2, 3, 4, 5, this x1 is 1, x2 is 2, x3 is 3, so on and so forth up to xn. So you can have n number of observations, right? And when you sum those observations up, that's why this summation sign is there. That will give you the numerator. Denominator mein is the n. That is the total number of values that you've got. Okay. So this will essentially give you the mean of the observations. Then median. Ab mode kya hai? Mode is the most frequent value of a variable. Generally, mode is used to calculate the central tendency of a of categorical data. So अगर high, medium, low है, and you see that okay, temperature जब आप measure कर रहे हैं, तो in the month of April to June ज़्यादा आपका high में आ रहा है temperature, right? So if you calculate the mode, तो आपको समझ में आ जाएगा okay, April, May, June के time पे गर्मी थी क्योंकि temperature वो most of the time was high. Where when you talk about July, August, September, it was medium, right? Because most of the times you observe on daily basis that the temperature was medium. And eventually during winters, you'll see that when you take the mode of the observations of the temperature readings, and it is a categorical variable where you're measuring things in HML, high, medium, low. So low up, you'll be the most frequent observations, and you can say, okay, temperature was low, so it was winters.
right? So simple सा तरीका to understand your data, right? So why do we use it? To understand कि हमारा data कैसा है, central tendency क्या है, कैसा उसका distribution हो सकता है. Okay, then there is something called as one more thing, very sensitive. Mean is very sensitive to outliers and anomalous data. So this is a very important point. Mean is very sensitive to outliers and anomalous data. क्या कोई मुझे बता सकता है कैसे, क्यों, why is this statement true? No, I don't. I have taught you now already. They don't answer. आप लोग सोच के बताओ, जिन जो अभी सीख रहे हैं, क्यों आपको ऐसे लगता है कि मीन जो है वो सेंसिटिव है टू अनोमलस डेटा, या जिसमें आउटलायर्स हो या एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन? व्हाई इज दैट द केस? वेदर जबकि मीडियन नहीं होता, मीडियन इज नॉट सेंसिटिव टू एक्सट्रीम और आउटलायर बेस्ड डेटा. जो अपना मीन रहेगा ना, वो डाटा क्वांटिटी उसको वेरी गुड, राइट. अब जैसे मैंने यहाँ ये ऑब्जर्वेशन लिखी है, देखो अब ये मेजरमेंट्स है, राइट, किसी चीज की 1 2 3 4 5 एंड ऑल ऑफ अ सडन यू सी दैट देयर इज 1000 आल्सो दैट हैज बीन मेजर्ड. अब ये तो क्लियरली मुझे पता है कि ये आउटलायर है, राइट. इट्स समथिंग दैट, I mean, that does not match the rest of the values in the data. So if I take the mean of this, the mean of this will be 169. But is that the real central tendency? It's not. Central tendency will be somewhere between 3 and 4. But when you take the median of this, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6th ऑब्जर्वेशन है, आप इसको सॉर्ट करोगे और आप इसकी मिडिल वैल्यू लोगे. अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मिडिल वैल्यू आपके पास है नहीं, क्योंकि ये इवन नंबर्स है, राइट. So what you'll do is you'll sum these guys up and take the mean of them. तो median इस केस में आपका 3.5 आ जाएगा, which is actually what your data looks like, right? 1 2 3 4 5 1000 हो सकता है कोई गलत हुई हो, डेटा एंट्री गलत हुई हो, या किसी सेंसर में कोई एरर आया हो, उस वजह से ये ऑब्जर्वेशन आई, राइट. सो mean is very sensitive to outliers, hence not recommended as a central tendency when you're dealing with data where there are extreme values. Okay, in that case you generally go with median value. ठीक है? Okay, clear है? Any questions on central tendency? ठीक है, let's go to measures of dispersion. Now measures of dispersion are primarily three: standard deviation, variance and interquartile range. So ये जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है. Okay, xi minus x bar divided by n. So let's say I have these observations, 1 2. Again, I'll stick with the same observations for the sake of simplicity. You have these 5 observations. इनका जो mean है, that is 3. Okay, 3 3 3 3 3. सबका mean 3 है. अब न्यूमरेटर में आपको क्या कंप्यूट करना है? xi minus x bar. What is xi? Xi is 1. Yeah. For the so x1 when I का value is 1 is 1. Now numerator tells you that you have to subtract xi minus x bar. That means 1 minus 3. Correct? And you have to square it. Correct? So that's also done. Then you have to sum all the I observations together. So basically हम ये compute करेंगे अब. 2 minus 3 square, 3 minus 3 square, 4 minus 3 square, and 5 minus 3 square. Right, so 1 minus 3 square will be 4, 2 minus 1 will be 1, this will be 0, this will be again 1, and this will be 4. Okay, ये हमने compute कर दिया. Next thing is to sum all of them up. तो sum करेंगे 4 4 8 9 और 10, कितना आ जाएगा 10. So ये जो numerator quantity है ये मैंने compute कर लिया. So my numerator here is 10. Denominator क्या है? 5. ठीक है, अब 5 और 5 2s are 10 और under root. So under root of 2 will be the standard deviation of your data.
That's the simplest way to calculate it. अब आप ये क्यों कर रहे हो? xi minus x bar क्यों कर रहे हो? Intuitively सोचो, why do you do xi minus x bar? Why not something else? क्योंकि जब आप हर ऑब्जर्वेशन को मीन वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप एक तरह से ये देख रहे हो ना कि वो जो ऑब्जर्वेशन है वो मीन से कितना दूर है. Each observation, how far it is from the mean, that you'll able to see when you are subtracting that value. You're squaring it. The reason behind squaring is because you saw there is a possibility of a negative number coming in sometime. तो वो negative number का effect खत्म करने के लिए हम उसे square करते हैं. And when we divide it by n, we also take the under root so that we can come back to the actual number, actual value that we were measuring. Right? So that's the basic intuition. So formula is xi minus x bar the whole square divided by n and under root of that. Okay. That is the standard deviation. Variance is nothing but the square of standard deviation. So अगर आप ये square root हटा दोगे इसमें से, that will become your variance. It's also denoted as sigma square. Standard deviation is denoted as sigma. जो यहाँ पे भी मैंने लिखा. Variance is denoted as sigma square. And then there is something called as interquartile range. So let me explain what I mean by quartiles. Okay, what is a quarter? 1/4. Basically, any quantity when you're measuring. I wanted to see quarter को लेके और क्या-क्या याद आता आप लोगों को. I saw a few smiles there, but ठीक है. So quarter is basically any quantity when you're measuring it in fourth of the overall part. Okay. So if you have, let's say ये आपका data है, okay, just a visual representation. If you divide it in 4 equal parts, that's when one part is called a quarter. What is a decile? So if you divide your data in 10 equal parts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right? I have divided my data into 10 equal parts. So one part of this is called a decile. What is percentile? When you divide your data into 100 equal parts. Also, what is important is that the data needs to be sorted first. So जब भी आप ये क्वार्टर में डिवाइड कर रहे हो या डिसाइल में डिवाइड कर रहे हो या परसेंटाइल में डिवाइड कर रहे हो, डेटा हमेशा सॉर्ट करके आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो. Okay, that's when you talk about these kind of measures. So percentile is when you divide it in 100 equal parts. What is a demidecile? Demidecile. Demidecile is when you divide your data into 20 equal parts. Okay. ये शायद आपको लिखना होगा, right? You guys might have to write this. मैं एक बार IQR कवर कर लेता हूँ. I'll cover IQR, फिर आप एक बार ये लिख लो. Okay, so demidecile, percentile, these are all ways to divide data. Now, when you're talking about quartile or when you're talking about a quarter, यहाँ पे आपका let's say 0% data है, यहाँ 25% आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, and 100 आ जाएगा. Correct? अगर मैं डेटा को इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, तो I can say that 25% of the data will be in first quarter, next 25% will be in the second, next 25 in the third, right? So when I'm measuring the IQR, I'm measuring this range, data between 25% and 75%.
जब मैं इसका डिस्पर्शन मेजर कर रहा हूँ, that's what I'm measuring using interquartile range, which is expressed by the formula Q3 minus Q1. Q3 आपका ये हो गया और Q1 आपका ये हो गया, right? ये Q1, Q2, Q3 and Q4. Right, so that is what you mean by IQR. You measure the value Q3, जो भी exactly Q3 या 75th percentile पे आती है उसको आप उठाएंगे, और जो 25th पे आती है उसको उठाएंगे, दोनों को subtract कर देंगे. Again, that will tell you how dispersed the data is. What is the dispersion of the data? What you see around 50 is the median value. Correct? 50th percentile पे, और जो बिल्कुल center में जो है, that will be your median value. So again, what you're trying to determine is what is the kind of spread that the data has around median or any measure of central tendency, median या फिर mean, right? Okay, ठीक है. Let's take this down. IQR when you're measuring dispersion. जब आप dispersion measure कर रहे हो, तो IQR is one way to measure dispersion. Apart from standard deviation variance, there is something called as interquartile.
Okay, आगे बढ़े. Any questions till this point? Okay, now we are going to talk about probability distribution. Okay, so so probability distributions are very effective ways to represent a particular distribution diagrammatically. अगर आप किसी distribution को visualize करना है, probability distributions are a very good way to do that. Okay, so if you look at, let's say, this variable, let's say this is the age of students who are taking data science course. Okay, 22, 25, 34, 40, 18, 27, like that. अगर आप, if you revisit the statistics lessons that we took in elementary school, तो आपको याद होगा हम पहले एक बिन डिफाइन करते थे, राइट? अपर लिमिट, लोअर लिमिट हर बिन के लिए डिफाइन करते थे. जैसे मैंने यहाँ किया है 15 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35 and 36 to 40. ओके, इस तरीके से मैंने बिन्स डिफाइन कर दिए. Sorry, this is 26 to 30, 21 to 25, 15 to 20. फिर आपको शायद ये भी याद होगा, हमें जैसे अब कोई क्वांटिटी अगर मिलती है 15 to 20 के बीच में, राइट? So we start looking for that quantity 15-20 के बीच में. Okay, this is one quantity. We would draw stick like this, right? Then next quantity is this. So we would put another stick against this bin, क्योंकि ये observation इस bin के अंदर lie कर रही है, right? इस तरीके से सारी. फिर एक और, there is another 17, right? 17, 18. Okay, ये same measurements actually. मैंने सब sort किया है. तो 17 और 18 जो है वो दो measurements आ गई इस bin के लिए. फिर next bin के लिए 21 to 25, right? I have 4 measurements 21 और 25 के बीच में. 22, 25, 28, 4 है क्या? हाँ, yeah. So 20 to 25 लिया था. But let's say we have 21 to 25 के बीच में we have 4 values. Okay, so उसके लिए हम ऐसे 4 sticks draw करते थे. So if we had 5 values, then we would draw a stick and cross it, right? फिर अगर further और values होती थी तो we would start doing the similar way. इस तरीके से let's say I've defined हर एक bin और हर एक bin के अंदर कितनी observations है, right? Frequency of observations in that bin. Now, if I have to plot that, right, using a frequency curve, a frequency bar plot, I can say this will be my first bin, right?
this will be my second bin, this will be my third bin, fourth bin and fifth bin, right? और जो मेरे को ऑब्जर्वेशंस मिल रही हैं, जो उनकी फ्रीक्वेंसी है, जैसे 15 और 20 के बीच में दो ऑब्जर्वेशंस मेरे को मिली, तो मैंने एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लिया इस तरीके से. Okay, then I found 4 observations between 20 and 21 and 25, so मैंने एक यहाँ पे बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया सेकंड बिन के लिए. इस तरीके से तीसरे में मुझे मिल गई, तो आई हैव ड्रॉन अनदर बार ग्राफ. देन फोर्थ के अंदर आई हैव ड्रॉन अनदर बार ग्राफ, एंड फिफ्थ के अंदर आई हैव ड्रॉन अनदर बार ग्राफ. ठीक है, सो सिंपल बार ग्राफ व्हिच इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर. सो किसी को पता है ऐसे? अच्छा, मैंने लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ हिस्टोग्राम. अगर आप देखोगे तो हिस्टोग्राम जो लोग अगर कैमरा यूज करते हैं, आपने प्रोफेशनल कैमरा भी किसी ने देखा होगा तो यूज किया होगा, तो उसमें भी एक हिस्टोग्राम आता है, ऐसे एक बार ग्राफ आता है, राइट? उसके अंदर वो दिखाता है पूरा कि आपके कलर रेंज पे किस फ्रीक्वेंसी के साथ कलर्स पिक अप होते हैं. So histogram is just a frequency measurement of different observations across bins, predefined bins that have been defined by us. Okay, now that's called a histogram. अब histogram से ही आप एक probability distribution curve generate कर सकते हैं. How you can do that? अब let's say मेरे पास total observations जो है वो 16 है. Okay, so what I'll do is I'll look at my first bin. I have 2 observations in the first bin. So I'll take that 2 divided by 16 will give me the proportion of the first bin, which will be 0.12. इस तरीके से second bin के लिए I'll do 4 by 16, it will give me 0.25. 5 by 16, 0.29. 3 by 16, 0.34. And 2 by 16, again 0.1. So when I plot this on a frequency, on a probability curve will always be between 0 and 1. Okay, probability is never less than 0, never greater than 1. And you'll start by plotting these points. So let's say this is your first bin. First bin के against आपका जो probability आया है वो 0.12 है. So let's say that's this point. Okay. Second bin के against is 0.25. ये आपका मान लो second bin है. इसके against is 0.25. This one. Okay. Then third bin है. Third bin पे point draw करेंगे 0.29. Like this. Fourth bin के लिए draw करेंगे 0.34. And then again for fifth bin it will be 0.1. So जब मैं इन dots को join करूंगा, this will give me my probability distribution curve. Okay. So histogram कैसे बनाना है सबको समझ आ गया? हिस्टोग्राम से प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी होगी सबको समझ आ गया. और फिर प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसे बनाना है, दैट्स आल्सो. प्रोबेबिलिटी मिल गई तो फिर आपको सिर्फ पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. they will almost be same, so they should be identical ideally, right? जिस हिसाब जैसे मैंने ये दिखाई है, ओवरले किया मैंने इसके ऊपर, तो अगर मैं प्लॉट को इसके ऊपर ओवरले करूंगा तो इट विल शो अ सिमिलर काइंड ऑफ, दे विल ऑलवेज बी वेरी सेम. सो अगर आपका हिस्टोग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा है, लेट्स से योर हिस्टोग्राम इज समथिंग लाइक दिस, राइट? तो आपका प्रोबेबिलिटी कर्व भी इसी तरीके से होगा. Okay, because directly your histogram is just converted into a, instead of a frequency you're taking a probability to measure it. That is the only difference. So वो curves हमेशा similar दिखेंगे आप when you're drawing it between a histogram and a probability curve. Okay. Okay, इसका take down some of the examples based on your understanding.
एसी नहीं चल रहा है। नहीं तो विंडो खोल दो पीछे का, थोड़ी वेंटिलेशन होगी तो। वन थिंग। Okay, so let's move forward. Now let's talk about our first distribution, which is normal distribution. Okay, so normal distribution के कुछ characteristics होते हैं. Generally, a normal distribution looks like this inverted bell-shaped curve or bell-shaped curve, because this looks like a bell, right? अगर आप एक bell को देखेंगे तो bell would look like something like this, right? This is a bell, right? And this curve exactly, if you look at this top of the bell, it looks exactly like a bell, right? So it is also called as a bell curve. Anybody has heard about this bell curve or anything? कहाँ पे सुना होगा आप लोगों ने? What else? आप लोगों में से कितनों को वर्क एक्सपीरियंस है काम करने का? वर्कड इन सम काइंड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिफोर? तो आपके जो अप्रेजल्स होते हैं, कभी आपने ऑब्जर्व किया है वो किस फॉर्मेट के हिसाब से होते हैं? बेल कर्व के हिसाब से होते हैं, राइट? So only a few people will get very good or very bad rating. Most of the people will get average rating, right? So that is what a bell curve also talks about. अब अगर आप इस normal distribution के देखेंगे, this normal distribution which is this red curve that I have, उसके center पे एक mu value है, right? Which is the mean of that distribution. Now, what you will observe in terms of characteristics of a normal distribution is that first thing, normal distribution is symmetrical in nature. Generally, a standard normal distribution is symmetric in nature. It is always centered around the mean / median, looks like a bell curve, and area under the curve, which is the area under this curve, ये पूरा का पूरा जो area है इसके अंदर है, अगर आप उसको measure करेंगे, that will be equal to 1. And area under the curve, since it is a probability distribution, at different points will be measured in terms of probability. Okay, probability distribution है,
तो इसके लिए जब भी आप एरिया अंडर द कर्व मेजर करेंगे किसी भी एक इंस्टेंस पे, सो लेट्स से इफ यू हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के टोटल एरिया अंडर द कर्व विल बी गिवन बाय दीज रेड लाइंस एंड द सम ऑफ ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल टू 1. बट अगर आप लेट्स से ये एक लाइन पिक करते हो और इसका एरिया कैलकुलेट करते हो, तो इट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी अंडर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, कि ये वाले इंस्टेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट. नाउ एरिया अंडर द कर्व, और अगर ये सारे इंस्टेंसेस को मैं सम अप करूं तो ये शुड ऑल बी टोटल बी इक्वल टू 1, राइट, बिकॉज इट इज अ प्रोबेबिलिटी. ओके, अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सबसे पहली चीज ये है कि 68% of your data falls in first standard deviation away from the mean. Now, what do I mean by that? So let's say I have 100 people who have to give appraisal ratings. Appraisal ratings are from 1 to 5. 1 जिसको मिल रहा है वो lowest मिल रहा है उसको, 5 जिसको मिल रहा है उसको highest मिल रहा है. ठीक है. अब जब मुझे appraisal rating देनी होती है, for example, when your manager gives you an appraisal rating, he has a particular budget, he has a particular constraint to meet in terms of वो कितना किसको दे सकते. So he has to decide कि मैं किसको high rating दूंगा, किसको low rating दूंगा और किसको average rating. Now that is purely on the basis of how you will perform. अगर कोई अच्छा perform कर रहा है बहुत ज़्यादा team में, तो he will fall into that bracket of 5 or high, 4 or high, right? But अगर कोई बहुत खराब perform कर रहा है, तो उसको आप 1 या maybe 2 के आसपास का rating. But majority of the people will get a rating around 3, 3.5, 2.5, something like that. Majority of the people. When I mean majority, that's what I'm saying, that 68% of the data, अगर ये पूरे data को मैं 100% मानूं under this curve, 68% of the data will be between one standard deviation. That means if I have 100 people to appraise, उनमें से मैं 68% लोगों को between one standard deviation का appraisal rating दूंगा. So that will mean that one standard deviation, मतलब अगर मैं mean compute कर रहा हूँ 1 to 5 का, that will be 3. स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया था हमारा इसका, √2, राइट. √2 कितना होता है 1.44. सो प्लस 1.44 माइनस 1.44, सो दिस विल बी 1.56 और 4.4. तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, दैट मींस 68% ऑफ द पीपल विल गेट रेटिंग बिटवीन दिस रेंज. ये रेंज कैसे आया, म्यू प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन और म्यू माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये जो म्यू है इसमें मैंने प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा किया, तो ये रेंज मुझे मिल गई. दिस विल हैव अबाउट 68% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस विद इन फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन. ओके, when you talk about second standard deviation will contain about 95% of the data. So जो येलो से मैंने मार्क किया है, this is your second standard deviation. तो अगर म्यू में आप प्लस ऐड करेंगे 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस और म्यू में माइनस करेंगे 2 स्टैंडर्ड डिविएशंस, तो उस रेंज के अंदर you will have about 95% of the data. इसी तरीके से if you further go out, you go to 3 standard deviations, then you will have about 99.7% of the data which will be present inside 3 standard deviations. Anything outside of that is called as an outlier, right? So you will have some observations which will be extreme. तो उन extreme observations को कैसे आप पकड़ेंगे? It's by either using a 2 standard deviation or a 3 standard deviation. Okay, so this is a characteristic of normal distribution, that 68% of the data will lie between first standard deviation, 95% will lie between 2 standard deviations, and 99.7% of the data will lie between 3 standard deviations. Okay, a standard normal distribution is with mu equal to 0 and sigma equal to 1. तो अगर आपको कभी कोई पूछता है कि what is the standard normal distribution, तो standard normal distribution will always be with a mean 0 and standard deviation 1. Okay, a normal distribution can have any mean or standard deviation, but a standard normal distribution will always have a mean equal to 0 and standard deviation equal to 1. Now, how do you define a probability density function? मतलब अगर आपको ये function mathematical terms में express करना है, right? ये जो हमने यहाँ पे बनाया है. So this is the formula that you can use. 1 upon sigma under root of 2 pi e raised to power minus 1 by 2 x minus mu upon sigma the whole square.
It's not very important. The formula is not very important. But I mean, nobody will ask you कि standard PDF क्या है, normal distribution का वो आप पूछो, वो आप बताओ. But I have written it here for the sake of completing the whole thing. All right. इसमें now इसमें कुछ चीजें हैं जैसे normal distribution can have different types. ठीक है? So those types are unimodal. Number one. Number two is bimodal. And number three is multimodal. Okay. Now unimodal is जहां पे ये जो आपको bell का ये दिख रहा है, right? That is one of that curve is present. One of that mountain is present. If there are two mountains like this, then it is a bimodal. If there are three or more, then it is called a multimodal. Right? So हमेशा आपका standard जो distribution है जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही दिखे आपको. कई बार इस तरीके से भी हो सकता है जिसमें आपके दो peaks हो, कई बार उसमें multiple peaks हो सकते हैं. Right? So that's how you sort of define the different types of distributions: unimodal, bimodal, and multimodal. ठीक है? So ये लिख लो इसके बारे में फटाफट. Mean zero सिर्फ standard normal distribution curve का होगा. Right? So that is important. Standard normal distribution, not a normal distribution. A normal distribution है talking about. The standard normal distribution. Zero नहीं है, but इसके ऊपर डिपेंड करता है. Multimodal case. Not necessarily. Mean zero कब आएगा? Standard normal distribution जो आप simulate कर रहे हो, तो आप उसमें constant हमेशा mean zero और one. But अगर आप कोई natural quantity measure कर रहे हैं, right, which could be let's say the amount of milk that a molecule is producing on daily basis, it will never be zero. It will always have some kind of, although each is for a very data. You can never have a mean. It will always have some bias. So the standard normal distribution is that's the next one. But this case will Correct. तो उस केस में अगर वो रीजन theoretically it is possible. In a real world, you not see. If you're living in an area जहाँ पे extreme hot, extreme cold, 0 degree touch करता हो, उससे नीचे भी जाता हो, सिले लद्दाख जैसे, right? हाँ हो सकता है कि but there is standard deviation. Standard deviation could be more than. It is a theoretical. कई बार आपको जनरेट करनी पड़ेगी कंडीशन पे for some studies number distribution variables is value even if it has a mean zero standard deviation is 1. Definitely zeros are 1 zeros and 1. But it is 0, it might go up to minus in terms of 12, 13, 14, whatever. But the one has when close to center, it is 4, 5, 6. It has only one bracket. This until you don't when the setting is rather majority of the time, 90 most of the time it will be one.
मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ मीन जीरो तो स्टैंडर्ड डिवीजन टू स्टैंडर्ड डिवीजन में फिर ड्रॉ करता हूँ सेकंड स्टैंडर्ड डिवीजन में भी 2 और स्टैंडर्ड डिवीजन में 3 this is first standard deviation this sigma 1 sigma 2 is 2 into sigma sigma 3 is 3 into sigma वो मेजर करोगे तो आपको पता चल जाएगा जैसे इस केस में अगर आप मीन कंप्यूट करोगे तो मीन यहाँ पे आ जाएगा राइट बिकॉज़ दे मीन सिमिलर मेजर तो मीन अगर आप कंप्यूट करोगे तो पूरा स्टैंडर्ड डिविएशन 1 will be computed from the mean will be somewhere over here राइट मगर स्टैंडर्ड डिविएशन 1 का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि डेटा ज्यादा स्प्रेड आउट है राइट इट्स अ हाई मॉडल अगर वो एक सिंगल मोड होगा तो वो इस तरीके से पर बाय मॉडल तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेटिकली मुझे दिख रहा है राइट स्प्रेड इज मोर because the spread between the mean itself अगर मैं इनका अलग-अलग मीन कंप्यूट करूंगा तो वो भी काफी ज्यादा स्प्रेड but if I combine their means and calculate one mean I can always assume that multi-numeric or binary but that's an assumption. It is an assumption. If you have a real world data, you need to validate that. First activation. Warm normal distribution. It's a category 2. Category binary. Let's go on. Continuous. It has to be numeric. आप generate कर सकते हो एक probability distribution for binomial the उसका पूरा ज़्यादा information नहीं है you know the for example pass of taking this way even if I draw bar graphs it will be the same in the in case of normal distribution it will be continuous very distorting Poisson distribution को अगर आप if you look at Poisson distribution over a bigger interval of time it will always approximate to normal. वो restaurant जो तुम वाला एग्जांपल दो हाँ सिग्मा कैलकुलेट किया था सिग्मा में कैलकुलेट किया था पिछले इसमें एडमिट को आया था इसलिए सिग्मा का वैल्यू
Let's take a break. After this, we'll do Barnum another distribution. Now this basically Python implementation for me, right? It's already been covered. We cover that.
Okay, let's talk about the next distribution, which is binomial distribution. So binomial distribution describes data that is situations where there can be only two results in a random experiment. Pass, fail, compliance or non-compliance, true or false, right? जहाँ पे सिर्फ दो outcomes है, that's a binomial distribution. So measure of tendency for a binomial distribution is given by NP, and standard deviation is given by under root NPQ. Now, what is P? P is the probability of success, and Q is 1 minus P, probability of failure. So the probability of success 0.7 है, probability of failure will be 1 minus 0.7, which will be equal to 0.3. Okay, N is the number of trials. तो अगर आप जैसे heads या tails वाला जो example है, so अगर आप बार बार किसी coin को toss करेंगे and you see whether it's a heads or tails, the number of trials that you run is basically how many times you're tossing that coin. Okay, and generally the probability of getting a head will be overall 0.5, and probability of tails will be 1 minus 0.5, which will be equal to 0.5. So अगर आप heads को success मानते हो, तो this will be success and this will be failure. Right? So probability of success, probability of failure, number of trials, the mean is given by NP, standard deviation is given by under root of NPQ. Okay? Questions? N is number of trials or observations. ठीक है, so दो ही outcome होंगे binomial में, true, false, yes, no, heads, tails, pass, fail. और जब आप probability of success measure कर रहे हैं, that will be one probability. Probability of failure will be 1 minus probability of success. क्योंकि दो ही outcomes है, और अगर total probability 1 है और एक outcome का probability 0.5 है, तो दूसरा outcome का probability will be 1 minus 0.5, which will be 0.5. Okay, ठीक है, let's take this down. जहाँ binomial variable, जहाँ binary variable है, जहाँ सिर्फ दो ही outcomes. Nominal में there can be multiple outcomes. Nominal और ordinal में multiple outcomes can be. नहीं, outcome दो ही होंगे. अब अगर आप मान लो कॉइन भी टॉस कर रहे हो, कॉइन टॉस में भी हेड्स या टेल्स ही आएगा ना हमेशा. ऐसा तो नहीं है कि हेड्स टेल्स के अलावा भी कुछ आउटकम आ सकता है. आउटकम विल बी ओनली टू, आइदर हेड्स और टेल्स. आप कितने भी ट्रायल्स करो, या तो वो हेड्स गिरेगा या तो वो टेल्स गिरेगा, राइट? सो इस वजह से इट्स कॉल्ड अ बाइनरी एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब रिलेशन नहीं है, करेक्ट. वो बाइनोमियल नहीं है क्योंकि वहां 6 आउटकम्स है ना. Depending on if it's a cube, it's a 6 outcome. If it's more edges, then it's more outcomes. Coin के केस में, results के केस में हो सकता है पास या फेल. जेंडर के केस में क्या होगा? करेक्ट, देयर आर मल्टीपल जेंडर्स. अगर आप देखोगे सब जगह पे सिर्फ मेल और फीमेल नहीं, अदर्स भी होता है, या फिर देयर कुड बी अदर जेंडर्स एज वेल.
But will gender be a nominal or an ordinal variable?
आगे बढ़ेंगे. Okay, so probability function for binomial distribution is given by this formula: n factorial upon n factorial into n minus x factorial, p raised to the power x, q raised to the power n minus x. You have to keep a few things in mind when you're applying a binomial distribution. One is that each trial has only two outcomes. The probability of each outcome remains independent over time, right? So जैसे अगर आप coin toss कर रहे हैं पहला, तो दूसरा जो coin toss है, that will be independent of the first one. The result of the second coin toss will not affect the first, or the first will not affect second. Okay. So this is also written as the third point. The outcome of one trial does not depend on another. ये probability function हम कब use करेंगे? We'll take an example to see how this probability function works. But let's write down this probability function as well as these three conditions that you need for applying a binomial distribution. हाँ हाँ, n factorial divided by n factorial into n minus x factorial into p raised to power x into q raised to power n minus x. Cancel तो कर सकते हैं, but wait. Let me rewrite this formula. Okay. N factorial upon x factorial n minus x factorial into p raised to power x into q raised to power n minus x. N is number of trials. N is number of trials. X is the event we are interested in. P is probability of success. Q is probability of failure.
Okay, let's move to the next slide. Okay, let's look at the application of this PDF that I showed you. Okay, so there are 10 questions. Okay, MCQ questions that a student has attempted, and each question has one correct answer. You have to find the probability that the student gets no answer correct. Okay, क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? एक एग्जाम है जिसके अंदर 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक आंसर करेक्ट. ठीक है, we have to find out the probability that the student is not able to get even one answer correct. Okay, so let's define what we have been given. So let x be the number of questions that are answered correctly. अगर मुझे ये पता चल गया कितने करेक्टली उसने आंसर किए, then I can find out how many he did not correctly answer, right? So I have x, I have probability of success. Since one question in a MCQ of 4 questions is correct, the probability of success is 1 by 4, or 0.25. Probability of failure is 1 minus 0.25, which is 0.75. Okay, so let's calculate Px equal to 0. इसमें आपको values fill करनी है, क्योंकि आपको दिया गया है n is equal to 10, x equal to 0 आपको find out करना है, आपको P दिया गया है 1 by 4 and Q दिया गया है 3 by 4. So we'll substitute that in this and we'll get the answer as 5.63. Then there is a 5.63 probability that the person gets no answer correct, that x is equal to 0. Because we defined x as the number of answers that the person can get correct, right? So when x is equals to 0, that means the person does not get any answer correct. अब अगर इसमें क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछा जाता, what is the probability that the person gets one answer correct, right? In that case, px would have been equal to 1. तो उस तरीके से आप x का वैल्यू चेंज करके आप इसकी probability कैलकुलेट कर सकते हो. So there is a 5.63 chance that the student does not get even a single answer correct, right? That's the application of the probability density function that I showed. Okay, so take this down.
Yes, Utkarsha. Yes, yes, I am. One second. कुछ है क्या? You have planned something for them? What is it? अच्छा, you need that class. Okay. नहीं, I can wind it up by 12. But वही है, फिर stats हमें complete करना था. तो ठीक है, I'll finish it off with. ठीक है, I'll wind it up by 12. Let's see. फिर हो सकता है next week we might need to spend some time, no? 1-2 घंटा शायद. Initially I'll have to spend that statistics. No. ठीक है. कोई बात नहीं. It's okay. Okay, guys. So 12 बजे हम लोग will finish off today. They need this classroom for something else. So we'll cover some of it tomorrow and some of it next week. But next week तो हो जाएगा because Python implementation सबने करी है, right? But I have to do this also ना, वो आपका in class exercise जो है. It's better if you do it right now. Okay, अभी concept भी नया है, आप समझ भी रहे हैं, तो we'll do one thing. फिर next week में we'll spend first half on completing this, second half on doing that exercise, in class exercise. ठीक है? Okay. Let's talk about Poisson distribution and we'll close it at Poisson distribution. ठीक है? So Poisson distribution basically discrete data के लिए हम लोग use करते हैं. And Poisson distribution में जब भी आप measurement कर रहे हैं, it will only take integer values, right? 1, 2, 3, 4, no fractions or whole numbers. ठीक है? And Poisson में जब भी आप कोई measurement कर रहे हैं, it is measurement over a interval of time. ठीक है? तो 3 चीज आपको याद रखनी है. Discrete data पे करते हैं, can take integer values and is measured over a interval of time, right? Poisson distribution को अगर आप generally let's say you try and visualize it. So let's say if you're talking about number of people who, okay, मैंने जो आप लोगों को example दिखाया था, remember वो वाला, let me show that. That's a good example. Actually, I can show you that. कौन सा रेस्टोरेंट था, किसी को याद है? गुड लक लिया था, क्रोमा लिया था शायद. गुड लक लेते हैं आज. उसका नहीं था. आज तो क्रोमा का भी नहीं दिखा रहा है. ये देखो, can you see this? This is a Poisson distribution. ओके, सी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको? ये हर दिन में कितने लोग क्रोमा पे जनरली आते हैं, right? And you can see these are sticks, right? At each time interval that are measuring how busy that particular place is at a particular time, right? So this is exactly what a Poisson distribution looks like. But you remember मैंने अभी क्या comment किया? If you aggregate the results of a Poisson distribution over a larger frame of time, it tends to look like a normal distribution. So for example, look at from Tuesday to let's say Thursday. तो ये आपको दिख रहा है, ये normal distribution की तरह. Actually, it looks like a bimodal distribution, right? So a Poisson distribution will approximate to a normal distribution if you increase the time intervals where you're trying to aggregate the data over it. But when you're measuring Poisson distribution, it will always have over a fixed interval of time a few occurrences happen, right? So जैसे ये वाला एक है, या दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था, number of cars that come to a toll booth in a given hour, right? So that will always be either 10, 15, 100,000, 10,000, right? But it will never be 10.5.
It will never be 12.5, right? It will be always an integer value, right? A whole number. Okay, so I've taken a few examples. Number of patients arriving at a physician's office, number of cars at a toll booth. These are the examples of a Poisson distribution. How do you measure the central tendency? The measure of central tendency is number of occurrences per interval of time denoted by lambda, and the standard deviation is given by under root of lambda or under root of the mean of a Poisson distribution. If you look at a larger interval, in the Poisson distribution measured over a smaller interval. जैसे आप 1 घंटे के अंदर देख रहे हैं, अगर आप वही टोल बूथ का अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करोगे 1 महीने के ऊपर, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी. One of the forms of distribution be noted by. तो क्यूब वन क्यूब वाला that you follow. The final value you can have one, then again you can have one. अगर इसको aggregate करेंगे, again plane का over one, also is not aggregate करेंगे number of Okay, any question? Okay, so probability density function is given by lambda raised to power x into v raised to power minus lambda divided by x factorial, and x is a Poisson random. Okay, अब इसका एक example देख. So let's say an author is writing a book, and we need to find out how many typos does he write. How many typos does the author write? So what we do is we select 100 pages at random from that book, and we are trying to find out what is the probability that he does not do any typos. Okay. So for that, we have been given that the average number of typos that he does over these 100 pages is 1.5. So it's an average, right? It's not an actual measurement. So it can be a factor, right? It can be a variable which has a decimal point number.
and we have to find X that he does not commit any typos. If we talk about picking up 100 random pages. So this 1.5 is basically the average number of typos that the person does, right? When he has been analyzed historical data mein, so he commits about 1.5 typos whenever he's writing a book. So for that, we'll substitute Px equal to 0 and we'll calculate the value. So हम इसे अगर value calculate करें 1.5 raised to the power 0 minus e raised to the power minus 1.5 divide by 0 factorial. 1.5 raised to 0 is 1. Anything raised to 0 is 1. E raised to power minus 1.5 is 1 upon 2.8 raised to the power 1 by 1.5. 1 upon क्यों किया मैंने? E का value क्या होता है? देखो, E का value is 2.86, something like this, I think. जैसे पाई है फिक्स क्वांटिटी 3.14, वैसे ही E जो है वो भी एक फिक्स क्वांटिटी होती है जिसका वैल्यू 2.86 और समथिंग होता है. तो मैंने क्या किया, ये e raised power minus 1.5 है, इसको मैंने चेंज कर दिया 1 upon e raised power 1.5 and 1 upon 2.8 raised to the power 1.5. And denominator में क्या आएगा? 0 factorial is again 1. तो आपका आंसर will be 1 upon 2.8 raised to the power 1.5, which comes out to be 0.2231. So that there is a 22.31% chance that the author will have no typos whenever he writes a book. Okay, whenever he writes a book with 100 pages, तो अगर वो 100 से 200 होता है तो probability increase हो जाएगी, 200 से 300 होता है तो probability increase हो जाएगी. But this test we are doing is at 100 pages, so that's why 100 pages के लिए there is a 22.31% chance that there will be no typos. क्या हुआ? हाँ. Correct. Probability increase ही होगी. Obviously अगर वो 100 pages में date mean भी change होगा. Obviously mean भी change होगा. तो आपका mean जैसे अगर 100 pages में 1.5 है, आप assume कर सकते हो कि it will be 3 for 200 pages, 300 pages, right? क्योंकि 100 pages में कर रहा है, but then you'll have to mention that you are assuming that if it is not given for 200 pages. क्योंकि जरूरी नहीं, अगर mean 100 page में 1.5 to 200 pages में obviously it will be twice the number of that, right? But sometimes it can be 2, sometimes it cannot,
right? So अगर आप ये चीज assume कर रहे हो तो you are required to mention that I am assuming that based on the current historical distribution, I'm assuming that for 200 pages it will twice be the number of the typos that is coming. Okay, तो कोई भी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बोला अगर आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन में हो सकता है अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप अज्यूम कर सकते हैं, राइट? बट यू नीड टू मेंशन द assumption that you are taking because that will affect your solution. Okay, so we are closing it here today, guys. This room is actually, I think, allocated to somebody else. We'll continue from here tomorrow, and we intend to finish statistics revision tomorrow. And the next session we'll have first half we'll do that, and then we'll solve an in-class exercise problem, right? Which is basically supposed to be done in the class itself. Okay. All right. Okay. We'll close it here today, guys. Thanks. Bye bye.